All right. Good evening, everyone. A very, very warm welcome to everyone to this wonderful session. I'm very excited for today's session. What I'm going to do is I'm going to start with three introductions, mine and Archana's and Anita's, and then I won't take any more of your time and hand it over straight to the nutritionist, our specialist today. My name is Geeta Dayal. I am the Managing Director of Healthy Mind Online in Singapore. I'm joining you from Singapore right now. Healthy Mind Online, as many of you know, is a digital portal. It's a digital platform with a focus on mental well-being. We have done extensive work in Singapore. We have worked with the Ministry of Health in Singapore. We have supported their employees. We have supported employees of the Agency of Integrated Care, which is an agency also connected to the Ministry of Health in Singapore. We have supported employees of various corporates here, and all that experience we have brought with us to India. We've launched in India some few years back. And so, yes, that's where we are at. And allow me to introduce the panelists. Many of you know Archana. Archana, if you could wave or just to let them know who I'm talking about. Archana is a chemical engineer by qualification, but her amazing skill set is in networking and communications. And she has been the founder member of various national and international level social development initiatives. Her notable contributions have been at the mission Anganwadi. And not only has Archana been a volunteer for the Anganwadi Task Force, but she has been instrumental in the initiative for restructuring and strengthening Anganwadis. अगर आप जानते हैं तो Anganwadis are the government preschools and nutrition program in India. And in Goa and Delhi, she has been a catalyst in creating statewide public and private partnerships. So, and also after she has done her master's in development management from the SPJN Institute of Management and Research in Mumbai. And she further added to her expertise in liaising, in her liaising skills. And be it corporates, be it government, be it foundations, be it stakeholders, she's a name to reckon with. She holds a diploma in integrative counseling, and Archana is passionate about the rights of women and children. She's a huge advocate for the rights of women and children. Archana is the advisor to Healthy Mind Online, and she has been associated with us right from our inception in India. Welcome, Archana. Glad to have you here. All right. May I introduce our specialist for today, Anita. Anita Agarwal. Anita, can you wave or... Yeah, that's her. So Anita has been an accomplished and reputed nutritionist, and she has the experience of 20 plus years. She has a wide experience in a relevant field for over 20 years. Just a minute. So her expertise is, she has this, just give me 1 minute, sorry. Sorry about that. So Anita's experience, as I was telling you, is in the healthcare and wellness sector. Her area of expertise is developing technical inputs in nutrition for achieving good health.
She works with individuals. She helps them achieve their goals in health and wellness, whether it is a psychological or a physical health problem. She has knowledge, expertise, and experience to deal with both. Her strength, her forte, is empowering people with scientific knowledge in a very easy to understand and simple manner. And this scientific knowledge forms the basis of some very, very practical guidelines that she gives to her clients so that they are able to achieve their health and wellness goals. Welcome, Anita. We are very, very, very fortunate and very happy to have you as our nutritionist on Healthy Mind Online. So our session today will be about the connection between food and nutrition and mental well-being. Is there a connection? Can we make small changes to our food and diet and lifestyle to achieve results that have a lasting impact, not only physically, but mentally? Can food affect our mental well-being, and can we make small, easy changes to improve our general quality of life? This is what Anita is here to help us understand. Without further ado, Anita, over to you. Thanks, Geeta, for the information. Good evening, everyone. Today, we will be talking about the link between food and the mind, right? So, mind or mental well-being. Do you think that there is a connection? Just a minute. I'll take this opportunity to tell all the participants, please, any question, any comment, please feel free to put that down in the chat. And please, जितना आप engage करेंगे specialist के साथ, उतनी आपको ज़्यादा value मिलेगी. So please feel free to ask your questions. Please feel free to participate and comment in the chat. Please use the chat function. If there's any question that occurs to you while the presentation is on, while Anita is talking to you, please feel free to write it down. All right. Sorry for that. Okay, we get back here. I have a question for all of you. Does the type of food we eat affect our mental well-being, or our current mood determines our food choice? In simple words, does food affect our mood, or mood affects food? You may write your answers in the chat box and share with us. आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में पूछ भी सकते हैं. क्या जो हम खाना खाते हैं वो हमारी मानसिक तंदुरुस्ती को असर करता है, या जैसे हमारा मूड होता है प्रेजेंटली हम उसके हिसाब से खाना खाते हैं? तो दोनों में क्या लिंक है? क्या फूड मूड को इफेक्ट करता है या मूड फूड को इफेक्ट करता है? I think mood से we choose our food. मेरा तो ये ख्याल है. Absolutely. और हम खुश होना चाहते हैं तो हम अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहते हैं, या जैसे मौसम बारिश का है तो पकौड़े खाना चाहते हैं. So मौसम भी असर करता है मूड पे. बिल्कुल बिल्कुल. मूड के अनुसार I think खाना भी चॉइस होता है. That's what I think. So we're getting some answers. Three people have said mood. One person has said both dependent. I think दोनों ही एक दूसरे पे depend करते हैं. But कैसे? That is important. कैसे? कैसे? अच्छा. But predominantly ऐसा लग रहा है mood से खाना choose होता है. Mood helps us choose our food. या कई बार ये भी होता है कि जब मूड खराब हो तो खाना भी अच्छा नहीं लगता. बिल्कुल बिल्कुल सही. Any more answers coming, or should we go on? You can go on. I think the majority has gone for mood. I mean, majority answers are saying mood. Okay, okay. Well, जो फूड और मूड है इनका दोनों का ही जो कनेक्शन है
वो इंटरडिपेंडेंट है। हमारा जो फूड है वो मूड को इफेक्ट करता है, और जो फूड है वो मूड को इफेक्ट करता है। Just a minute, there's some problem. Sure, sort it out, Anita. Don't worry about it. Right. So now you see, our food affects the mood. If we are eating good food, then we feel energetic. We will have our improved mental abilities, increased concentration, memory, alertness, clarity in thinking. And if we don't have the right kind of food, then we feel lethargic and moody. अच्छे खाने से हमें एनर्जी आती है, और हमारे मन मानसिक जो तंदुरुस्ती है और उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। और अगर हम ठीक से खाना नहीं खाते तो हमें बिल्कुल भी सुस्ती रहती है, मूडी रहता है, कुछ करने का भी मन नहीं करता। दूसरी तरफ मूड और फूड का भी इक्वल रिलेशन है। फूड अफेक्ट्स मूड एंड ऑल्सो मूड अफेक्ट्स फूड। जो भी हमारा मूड हो, अगर हम दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, एंग्री हैं, तो हम कंफर्ट फूड खाना चाहते हैं। आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, कुकीज, चिप्स, ये सब हमारे मूड को बेहतर करते हैं। और खाली टाइप ऑफ फूड ही नहीं, वी ऑल्सो गो इन फॉर क्वांटिटी ऑफ फूड। आप देखेंगे कि जब आपका मूड खराब है तो आप ज्यादा भी खाना चाहते हैं। Okay, now let's talk about mental and emotional well-being. What is mental and emotional well-being? It includes psychological and social well-being. It affects how we think, feel, and act. Practically, if we see, it means to be able to learn, remember, and think clearly, be mentally alert, be able to solve problems and take decisions, have increased focus and concentration, be able to regulate our emotions, manage stressful conditions calmly and effectively, and be able to form and maintain social relationships. तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक खुशहाली अगर हमारे अंदर है तो हमारे लर्न करने की शक्ति, याद करने की शक्ति, सोचने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। हम ध्यान और एकाग्रता से अपना काम कर सकते हैं। तनावपूर्ण परिस्थिति में भी शांति और प्रभावशाली वे से हम डिस्कशंस कर अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और सामाजिक रिश्ते बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि how the food affects our cognition, emotions and mood. Before going further, let us understand the meaning of each of these terms. Okay, cognition. Cognition are those mental processes which are involved in knowing, learning, and understanding things like attention, thinking, memory, and problem solving. Cognition का मतलब है कि ऐसी मानसिक प्रतिक्रिया जिससे हमें जानकारी मिलती है, जिससे हम लर्न कर सकते हैं, हम चीजों को समझ सकते हैं और हमारा ध्यान, यादाश्त और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इमोशंस। Emotions are feelings which are caused by a specific event. Now, these emotions, they last for a short time, and you can easily see from a person's facial expression what emotion the person is feeling. Emotions जो या भावनाएं जो हैं, वो एक विशेष घटना से उत्पन्न होती हैं, छोटे टाइम के लिए होती हैं, और हम चेहरे के भाव से उनको पहचान सकते हैं। So I have a little exercise for you. You have to decipher the emotion. See the face, this is the facial expression. You have to decipher which emotion it is depicting. ये कौन सा emotion, ये कौन सा भाव दर्शा रहा है। Please अपने answers chat box में लिखिए।
There's 7. कोई तो दिख ही रहा होगा आपको. 6. There are 6. 1 2 3 4. Oh, मुझे एक There are एक्स्ट्रा 6. कैसे दिख रहा है? There are 6. There are 6. Double vision. Okay, the first one, jaldi se. Anyone? Any answers? Angry, anger, angry. Yes. Angry. Gussa. Hmm. Number 2. Sad, sad, Yes, right. sad, sad. Clearly sad. Yeah. Number 3. Surprise. Absolutely right. Number 4. Oh, happy. Yeah. Clam? Fifth. Clam must be a Calm. calm. Sorry. Yes, it is calm. Sorry. Calm. Then the 5th one. Fifth one Is a little difficult to guess. Confused, I think. Revolted. I mean, nauseous. Disgust. Disgust. Oh, thank you. Disgust. Green. Disgust. And the last one? Scared. Nausea, scared, fear. Yes, absolutely right. So Fear. now you see easily with the facial expression, we can recognize the emotions. Now we go on to the mood. Mood also depicts a particular emotion, but it is mainly 2 types, a good mood or a bad mood, happiness or sadness. It is less intense. It is more long lasting. It is less focused. And it is not indicated by a facial expression. You can see that the person may not be in a good mood, but why? You will not be able to tell. Mood is influenced. It can influence motivation, decision-making, social interactions, and even memory and attention. तो मूड जो है हमारी मनोदशा, ये भी एक इमोशन को ही झलकाती है, पर इतनी डिटेल में नहीं जितना हम इमोशंस, जितनी हम भावनाओं को देख सकते हैं. तो मूड अच्छा होता है या बुरा होता है, या हम खुश होते हैं या हम दुखी होते हैं, इसकी इंटेंसिटी कम होती है, ये ज्यादा देर के लिए होता है. हमारा मूड खराब रहेगा तो 1 या 2 मिनट के लिए नहीं रहेगा, ज्यादा देर के लिए रहेगा. इस टाइम में हम कम फोकस्ड होते हैं और ये हमें फेशियल एक्सप्रेशन से भी दिखता नहीं है. और ये हमारे काम करने की इच्छा, हमारे डिसीजन मेकिंग, हमारे लोगों के साथ इंटरैक्शन, हमारी यादाश्त, हमारा अटेंशन स्पैन, इन सब को असर करता है हमारा मूड. एनी क्वेश्चन सो फार? Any questions? Please feel free to put in the chat box. Please, we can proceed, Anita. Okay. Now let us look at the mechanism by which food affects our mood, emotion, and cognition. Although we have seen that cognition, mood, and emotions are different things, for the purpose of ease, I will be using the general term mood here. तो आप देखिए, जो खाना हमारे जो मूड को इम्पैक्ट करता है वो किस तरह से करता है, वो 3 तरह से करता है. ब्लड शुगर लेवल्स, ब्रेन केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमिटर्स, और गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Can anyone tell me what is gut? Please write your answers in the chat box. The question is gut क्या होता है? Do we spell it G-U-T? Yes. Okay. Does anyone know what gut is? Strong feeling about something. That is one answer that has come in. Great. So that is a gut feeling. Yeah, the gut feeling. Yes. Gut feeling is an instinct or an intuition. Yeah. There is another meaning to gut, and that is your gastrointestinal system, your digestive system. जब भी हम कभी nervous होते हैं तो आप या बहुत excited होते हैं तो you feel your butterflies in the stomach.
या बहुत नर्वस है, एग्जाम देने जाना है तो स्टमक अपसेट हो जाता है। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो गट फीलिंग भी वहीं से आई है कि मेरे अंदर से एक भावना आ रही है, मेरे को ये इच्छा हो रही है या ये मुझे पता लग रहा है कि ऐसा होगा, ये इंट्यूशन है, ये मेरी फीलिंग है। सो गट जो हम यूज करेंगे वर्ड इन मेडिकल साइंस, गट होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र है। दैट इज आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, वेयर द फूड इज डाइजेस्टेड, दैट इज कॉल्ड द गट. Now let us look at each of these blood sugar, brain chemicals, and gut microorganisms and see how they affect our mood. Okay, first is the blood sugar levels. आप में से जो भी डायबिटिक हैं वो तो अपने ब्लड शुगर्स रेगुलरली टेस्ट करते रहे होंगे, बट फॉर अदर्स, जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है खाने से, ऐसे ही हमारे ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए होती है और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फंक्शन के लिए. एंड द फ्यूल विच द ब्रेन नीड्स इज ग्लूकोज. ग्लूकोज कहाँ से आता है? हम ग्लूकोज खाते तो नहीं है, ग्लूकोज इज प्योर, ग्लूकोज का पाउडर अगर आप पिए तो दैट इज ग्लूकोज. पर हमारे खाने में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होके बॉडी में ग्लूकोज बन जाते हैं, और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन को एनर्जी देता है. जब भी ये ब्लड शुगर it gets too high or too low, it affects a mood in different ways. Now you see this graph. After having a sugary meal, they cause a rapid increase in the blood sugar level. So you see a smiley on top, so there is energy boost. It makes us excited, happy and calm. और जितनी जल्दी से ये शुगर बढ़ी है उतनी जल्दी फिर ये कम भी हो जाएगी. See the graph going down. So there is a sudden crash of glucose. It is removed from the blood. The blood sugar levels go low and we feel exhausted, drained of energy, and we look for more food. तो ब्लड शुगर कम होने के दो कारण हो सकते हैं. या तो आपने बहुत देर से खाना ही नहीं खाया है तो भी आपके ब्लड शुगर्स लो हो जाएंगे, और अगर आपने कोई बहुत रिफाइंड चीज खाई है जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो उसको भी डाइजेशन की जरूरत नहीं होगी, एंड इमीडिएटली योर ब्लड शुगर लेवल्स आर गोइंग टू राइज. When they rise very immediately because the food is already digested, it will go down, it will crash also very fast. And when it will go down, you will feel anxious, annoyed, impatient, irritable, tired and hungry. तो आप क्या महसूस करेंगे जब आपकी ये शुगर कम हो जाएगी? चिंतित, बहुत गुस्सा आएगा आपको, बेताबी होगी, चिड़चिड़े हो जाएंगे और आप थक जाएंगे. अब हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? If we eat simple carbohydrate foods like white bread, things made from maida, white rice and sweets, there will also be a swing in the blood sugar. See the red graph? It will go up and it will come down. It will go up soon and then it will also come down soon. But if we have foods which are rich in fiber, like our whole grains, vegetables, fruits, pulses, then you see the dotted blue line graph. It increases slowly and it comes down also very gradually. So this will give us long-term energy and it will also stabilize our mood. There will not be such drastic mood changes कि एक पल तो हम बहुत खुश थे, बहुत happy थे और suddenly हम बहुत irritable हो गए. So if we want to keep our blood sugar levels in control, definitely for diabetics as well as for general people to feel good, then you need to have complex carbohydrates, which means whole grains, vegetables and fruits, all of which are high in fiber. Next we come to the brain chemicals. Brain control the release of certain chemicals. कुछ रसायन हमारे brains रिलीज करते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को इफेक्ट करते हैं. They influence, if you look at it from a mental well-being point of view, then they influence our mood, emotions and behavior. Now you would be thinking, what is the relation between these neurotransmitters with food? Well, these are made from specific amino acids that we get from our protein-rich foods. जब हम प्रोटीन वाले खाने खाते हैं, जैसे आपके मिल्क हुआ, प्रोडक्ट्स हो गए, नॉन वेज हो गया, दालें हो गई, तो उसमें
डाइजेशन के बाद जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बनते हैं, ऐसे ही प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, और उन अमाइनो एसिड्स की वजह से ही हमारे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामीन, एसिटाइलकोलिन। अगर आप इनके फंक्शंस देखें तो सेरोटोनिन जब राइट अमाउंट में होगा तो मूड को स्टेबलाइज करेगा, इट विल गिव अस फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, वेल-बीइंग, इट विल रेगुलेट आवर स्लीप एंड एपेटाइट. But if you're not having the right kind of food, then we will have a low mood, we'll be sad, depressed, we'll be anxious, we'll have difficulty in sleeping, and we will crave for sweet food. Serotonin is made by carbohydrate foods. The rest of the neurotransmitters are made by the amino acids which come from the protein foods. इसलिए जब serotonin की level कम होते हैं तो we crave for sweet foods. The other transmitter, dopamine, it helps us to focus, it helps us to concentrate, increases our memory, boosts our mood, and motivates us. And if you're not eating the right kind of food, it will become deficient, and we will lack focus, motivation, energy, we will have memory problems, and we will crave for stimulants. Stimulants could be anything, a tea, coffee, a drug, alcohol, anything. So when the dopamine levels are less, you crave for stimulants. Another transmitter, neurotransmitter, acetylcholine, its function is memory, thinking, attention, and learning. और ये बहुत जरूरी है जब हमें अपनी पढ़ते वक्त बच्चों के लिए या किसी के लिए भी अगर हमें अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज इंक्रीज करनी है, अपनी याददाश्त, अपने सोचने का, लर्निंग का तरीका बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो इसके लिए हमें एसिटाइलकोलिन की जरूरत है. और अगर ये कम होगा तो देयर विल बी मेमोरी प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, डिफिकल्टी इन लर्निंग. सो the food affects the synthesis of these neurotransmitters, and they in turn affect our mood. Now next we come to the gut microorganisms. जो हमारी intestines हैं, उनमें there are millions of bacteria. हमारी बॉडी के अंदर millions of bacteria रहते हैं. आपको क्या ये बात पता है? Please write in the chat box, do you know that we have millions of microorganisms in our body living with us, within us? Okay, these microorganisms. So the answers are primarily yes. Most people seem to know this. Okay, that's great. So these microorganisms are both good and bad. Some bacteria, when they are in excessive amounts, they cause infection and disease, while the other type of bacteria, which are the good bacteria, when they are in the right amount, they help us to fight disease and stay healthy. Now, these good bacteria are also responsible for the production of neurotransmitters. जो हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये बैक्टीरिया न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं. So it is very important to have a balance of good bacteria and bad bacteria in our intestine. It will help us improve our immunity, better digestion, and even better mental health. Now, how can we maintain this balance of bacteria? वो तो अंतर है, हमें दिखते नहीं हैं, but how can we maintain a balance between the two? Well, this is with the use of probiotics and prebiotics. I'm sure you would have heard of the term probiotics. Can anyone tell me what are probiotics? Please write your answers in the chat box. Probiotics. Not heard. Okay, one answer says not heard. Not sure. So, okay. So if you've not heard of probiotics, they're very, very important. Probiotics are live bacteria, good bacteria, similar to those that we have in our gut. I have one answer. Sorry, Anita. I have one answer saying good bacteria, one answer saying opposite of antibiotics. Okay. Please carry on. Yeah. So probiotics are live good bacteria. They are similar to those good bacteria which are present in our gut. Now, these probiotics can be found in food as well as supplements in powder or capsule form. Now, which foods will have probiotic? Live organisms किसमें होंगे?
जब हम दही बनाते हैं, दूध से दही जमाते हैं, तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो दही जो ऐड करते हैं दही जमाने के लिए दूध में, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो आपका दही, छाछ, जब आप कोई भी चीज फर्मेंटेशन से बनाएंगे, इडली, डोसा, उत्पम, कांजी, पिकल्स, इन सब में प्रोबायोटिक्स आ जाते हैं। जब भी वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है तो उससे उसमें गुड बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, विच आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस। अगर आप इंस्टेंट सूजी बना रहे हैं, इंस्टेंट सूजी इडली या डोसा बना रहे हैं इनो डाल के, तो उसमें प्रोबायोटिक्स नहीं होंगे। अगर आप किसी बैटर को फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं पूरी रात, तभी उसमें गुड बैक्टीरिया डेवलप होता है और वो एक प्रोबायोटिक फूड बन जाता है। तो अगर हमें अपनी बॉडी के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने हैं तो हम प्रोबायोटिक्स का सेवन करें। तो अगर फूड में देखें तो दही, छाछ, फर्मेंटेड फूड्स, आजकल कुछ रेडीमेड फूड्स भी आते हैं, आपने सुना होगा, ये बिग शॉपिंग स्टोर्स पे मिलते हैं। दे आर sauerkraut, miso, kimchi, kombucha drink is also very famous, but हमें वो सब लेने की जरूरत नहीं है। We can have our daily household items and have probiotics. आपने याकुल्ट का नाम सुना होगा, that was very famous. In Delhi we have Mother Dairy, Nutrifit. आजकल प्रोबायोटिक दही भी आता है, एक नॉर्मल दही भी आता है और एक प्रोबायोटिक दही भी आता है, जिसमें उन्होंने मेजर करके वो बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं। तो कभी भी अगर आपका स्टमक अपसेट हो या आपने एंटीबायोटिक्स खाए हो, जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमारे जो गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो किसी ने कहा था बहुत राइट कि दे आर ऑपोजिट टू एंटीबायोटिक्स। दे आर नॉट ऑपोजिट टू एंटीबायोटिक्स। दवाइयां होती हैं जो हम ठीक होने के लिए खाते हैं, पर उससे हमारी बॉडी के जो हमारे गट में गुड बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। तो जब भी आप कभी एंटीबायोटिक खाएं तो उसके बाद अगर आप ये फर्मेंटेड फूड्स खाएंगे तो आपकी बॉडी के गुड बैक्टीरिया जो है वो वापस आ जाएंगे। दूसरी चीज जो है वो है प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स बहुत कम लोगों ने सुना होगा। प्रीबायोटिक्स आर फूड फॉर प्रोबायोटिक्स। जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है उनका खाना प्रीबायोटिक्स होता है। तो प्रोबायोटिक आर द बैक्टीरिया एंड प्रीबायोटिक यू कैन से इज द फूड फॉर द बैक्टीरिया। अब ये जो फूड है वो कौन सा फूड है? ये है नॉन डाइजेस्टेबल फूड, जो कुछ फूड्स में होता है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं फाइबर। ये वाला जो फाइबर है ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड ही आगे चला जाता है और वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फर्मेंट हो जाता है। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, the good bacteria eats these products. So the foods which are rich in prebiotic, they are onion, garlic, oats, wheat, barley, apple with skin, soya bean, peas, beans, underripe banana. In fact, boiled and cooled potato and rice are also prebiotic. If you boil the potatoes, if you boil the rice, keep them in the fridge for some time and then take it out, then it is not digested in your stomach and intestine. It becomes a prebiotic and it is fermented in the large intestine. Both probiotics and prebiotics are available as supplements also. अगर आप केमिस्ट स्टोर पे जाएंगे एंड यू आस्क फॉर प्रोबायोटिक्स, देयर आर डिफरेंट मल्टीपल्स जिसमें अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट, and even prebiotics, and there are also compositions where there is a combination of prebiotic and probiotic. But हमें सप्लीमेंट या बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, हम इसको घर पे ही ले सकते हैं। अगर आप एक ओट्स पॉरेज बनाएं और उसमें छिलके वाला एप्पल डाल दें तो हमारा प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक इकट्ठे हो गया। ऐसे ही अगर आप कर्ड राइस बनाते हैं तो चावल को उबाल के हमने फ्रिज में रखा है, फिर निकाल के उसका और उसमें कर्ड डाल के जो हमने कर्ड राइस बनाया, वो भी एक प्रोबायोटिक प्लस प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे उससे गुड बैक्टीरिया भी बढ़ेंगे और उनको खाना भी मिलेगा और वो और नंबर में बढ़ जाएंगे, जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ और इवन मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। Any questions so far? If you have any questions, please write in the chat box. We can proceed, Anita. Okay. Most likely last May we will have a question answer session. Right. But right. of course, like as we said, बीच में आपको सवाल सूझता है, आप please लिख दें. Okay. Whatever we eat can have a positive effect as well as a negative effect on our mood.
So let's see कि किन चीजों से, किस टाइप के खाने से, कौन सी eating habit से we have a negative impact on our mood. First is high sugar intake. If you eat foods very rich in sugar, then you will feel fatigue, anxiety, you'll have aggressive behavior, depression, learning difficulty. बहुत ज्यादा चीनी खाने से थकान, आप हमेशा चिंतित रहेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, डिप्रेशन हो सकता है, सीखने में कठिनाई होगी. अगर आप हाई ट्रांस फैट्स लेते हैं, अब ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? नॉर्मली जो ऑयल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, पर उनको सॉलिड फैट में कन्वर्ट किया जाता है तो वो ट्रांस फैट्स बनते हैं. इसका एग्जांपल है मार्जरीन. बटर के अगेंस्ट आपको याद होगा कुछ साल पहले तक बहुत फेमस हुआ था कि मार्जरीन ऐड कर लो, द मार्जरीन इज बेटर देन बटर, बट इट इज नॉट, इट इज ट्रांस फैट. और जो एक डालडा घी नाम से आता है विच इज सॉलिड फैट, डालडा है या जो वनस्पति घी है, दैट इज ऑल्सो ट्रांस फैट. नाउ दीज आर वेरी बैड फॉर योर बॉडी. और ये किन में पाए जाते हैं ट्रांस फैट्स? मोस्टली आपके फ्राइड फूड्स में. जब हम मोइन यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए, मट्ठी बनाने के लिए, नमकीन्स बनाने के लिए, तो उसमें सॉलिड फैट ऐड करते हैं, क्योंकि वो सॉलिड फैट्स जो होता है उससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है. तो जितने भी कमर्शियल अगर आप प्रोडक्ट्स लेंगे तो उनमें ये ट्रांस फैट ऐड होता है. तो दिस कैन बी फाउंड इन योर फ्राइड फूड्स, पैकेज्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड, समोसास, मट्ठीस, नमकीन्स, commercially baked cakes, biscuits, etc. And these are very bad for your cardiovascular health, आपके हार्ट के लिए भी बुरे हैं, and even for your mental health. इससे हमें एंजाइटी, मेमोरी प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन और डिप्रेशन हो सकता है. कभी कभी कुछ लोग डाइट पे जाने के लिए अपनी डाइट में से फैट बिल्कुल हटा देते हैं या बहुत कम कर देते हैं. उससे भी हमें एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि फैट हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन के लिए दोनों के लिए ही जरूरी है. तो इसको हम बंद नहीं कर सकते. आप इसको कम कर दीजिए चाहे, पर बंद कभी नहीं करना चाहिए, या बहुत कम भी कभी नहीं करना चाहिए. कुछ लोग डाइट में कीटो डाइट और समथिंग फॉलो करते हैं, तो उसमें भी आप लो कार्बोहाइड्रेट में चले जाते हैं. आप बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और आप ज्यादा प्रोटीन्स खाते हैं. तो जब आपकी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा कम हो जाएंगे, और ये तब भी हो सकता है कि जब आपने खाना ही नहीं खाया तो आपकी ब्लड शुगर के लेवल्स कम हो गए, या आपने कुछ चीनी वाली या ज्यादा मीठी चीज खा ली तो भी आपकी शुगर बढ़ी और फिर एकदम से कम हो गई. तो वही सिम्टम्स आएंगे जो लो ब्लड शुगर के होते हैं: फटीग, लो एनर्जी, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी. हमारी बॉडी के लिए कुछ विटामिन और मिनरल्स भी बहुत जरूरी हैं. इनफैक्ट जितने भी हैं वो सब जरूरी हैं, पर स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ के लिए जिंक, आयरन, विटामिन बी, विटामिन डी, मैग्नीशियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर ये राइट अमाउंट्स में नहीं हो हमारे डाइट में, तो we will have bad mood and low energy levels. Another very common deficiency is vitamin B12 deficiency. Now, this is commonly seen in people who are vegans, who don't eat any animal food, people who are diabetic or have PCOD and they are on metformin medicine, and also in elderly. Vegan है तो आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, और B12 के सोर्सेस सारे नॉनवेज फूड में होते हैं. When you're taking metformin for your diabetes or your PCOD, तो उससे आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम होती है और उसी के कारण आपको B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है. तो अगर आप मेटफॉर्मिन खा रहे हैं तो मेक श्योर यू गेट योर B12 लेवल्स चेक्ड, और उसकी डेफिशिएंसी ना हो तो फिर आपको उसका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा. और तीसरा, जब आप एल्डरली हैं तो भी आपकी स्टमक में इसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, तो एल्डरली में भी B12 डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसी के कारण आप देखेंगे कि हमेशा थकावट रहती है, मेमोरी पुअर हो जाती है, डिप्रेशन है, सुस्ती रहती है. Now I have a question for you all. How do you feel after taking alcohol? What is that you feel? Please write your answers in the chat box. The question is, after having alcohol, आपको कैसा महसूस होता है? यदि आप अल्कोहल लेते हैं, so please answer. Sleepy. Someone has answered sleepy. Okay. Waiting for more answers to come in. Someone is saying, I've never tasted that. Okay, that's great. If you've tasted that, this question is for you.
I usually have a headache, actually. Okay. Someone is saying I feel relaxed. Right. Okay. Someone is saying I feel lightheaded. I have a light head. Right. So, okay, I think we can proceed. Yeah. When you consume alcohol in low doses, it depresses your brain function. It gives you a feeling of relaxation, good mood. Aaj, mera mood bahut kharab hai, chalo, let's have a drink. You know, this is very common because you get that initial good feeling. But at high doses, you experience intensified emotion, such as jealousy, anger, depression, and it causes unpredictable mood swings, decreased inhibition, and a false sense of confidence. If you're drunk, you may do any action and you will not even get to know. You must have seen people who get drunk and then they have an erratic behavior because it reduces all your inhibitions and you get a false sense of confidence and you're able to plunge and get into anything dangerous. So alcohol in limits is fine, but at overdoses, it is bad for your health. Next, we come to eating habits. If you go for long periods of time without eating, again, you'll feel tired, irritable, impatient, and annoyed. Breakfast is the most important meal of the day. That is because you are having it after 12 hours or 10 hours of fasting. So it's the first meal of the day, and you should never miss your breakfast. If you miss your breakfast, you will feel weak, tired, and you will have difficulty in concentration. So always have a good breakfast. Never miss your breakfast. चने भटूरे खा के कभी काम करने की कोशिश की है? If you overeat or if you eat a large meal rich in fat, then you feel lethargy, sleepiness, sluggishness, कोई काम नहीं हो सकता, कोई concentration नहीं होगी, you would not be able to do anything. Now, if you don't drink enough fluids, mainly water, then also it is difficult to concentrate and think clearly. Let's see how water affects our mood. हमारी जो body है, it is made up of 60% water. And our brain is 75 to 80% water. When we drink less water than what is needed by our body, then it will lead to bad mood, tiredness, it will make us irritable, it reduces our alertness and concentration. So how much water should we drink? Well, basically the ideal is a range because it will depend on your body, your metabolism, which kind of climate you are in, what kind of physical activity you're doing, how active you are. So generally the recommended water intake range for women is 8 to 16 glasses, and for man or men it is 10 to 20. So for females it is 8 to 16, and for males it is 10 to 20 glasses of water. Now between 8 to 16, I'm having 9, it's fine, or I'm having 15 is fine. So how do you determine whether you're having enough water or not? A very simple thing is if you urinate infrequently in small amounts, or if your urine is dark yellow in color, it is an indication that your body is lacking water and you should increase your water intake. If you are adequately hydrated, then the color of your urine will always be a pale yellow in color. So that is a good indication to see whether you are having enough water or not. Now let us see how we can use food to boost our mental well-being. Which foods are beneficial to us for boosting our mental health? Okay, these are the foods. I'll tell you why these foods, what is there in these foods that help you to improve your mood. Fruits and vegetables like banana, pineapple, strawberry, grapes, spinach, asparagus, avocado. Fruits have lots of nutrients, lots of good nutrients, vitamins, minerals. They are rich in these and they are good for your physical health also as well as your mental health.
Then we come to these nuts and seeds, pumpkin seeds, chia seeds, almonds, cashew nuts, peanuts. They are all rich in magnesium and also omega-3 fats. And they prevent irritability, fatigue, mental confusion, and stress by boosting the neurotransmitter serotonin. Quinoa. Quinoa is again a wonder food, you can say. It is a cereal, but normally cereals are not rich in protein, but quinoa is one such cereal which is very rich in protein. It has quercetin, which has antidepressant effects. Next is the fatty fish like salmon, herring, mackerel, and sardines. These are rich in omega-3 fats, and they ease anxiety and stabilize our mood. Turmeric. Turmeric you all would be familiar with. In COVID times, we've all had turmeric milk and kadha with lots of turmeric added. Now, turmeric has curcumin, which enhances mood. And curcumin की absorption can be increased with the addition of fat. अगर आप देखेंगे कभी भी हम हल्दी लेते हैं तो दूध के साथ हल्दी लेते हैं, क्योंकि दूध में कुछ फैट होता है और उसमें हम हल्दी डाल लेते हैं, तो curcumin plus fat is better absorbed. Another way of increasing curcumin absorption is by having a freshly ground black pepper along with turmeric. If you see supplements which are coming in the market, the curcumin supplements, they are also now coming in combination with piperine. So curcumin and piperine, curcumin from turmeric and piperine from black pepper. So this helps in increasing your absorbability of curcumin availability in the body. Dark chocolate. It lightens mood, cures mood swings, makes you feel both happy and stimulated. It contains phenylethylamine, a compound which makes feel-good hormones. But you don't have to eat a milk chocolate or a white chocolate. It has to be only a dark chocolate with more than 70% cocoa. Next is green tea. Green tea has caffeine, which improves alertness, performance, memory, and focus. It also has antioxidants, जो हमारे brain को protect करते हैं. And theanine होता है इसमें, which affects our serotonin and dopamine, the neurotransmitters. And they reduce the feeling of anxiety and make us calm, happy, and they give us a tranquil feeling. Now, next is the probiotics and fermented foods, which we have already talked of. Their importance for our gut health and also our mood. Now, if we have to improve our memory, focus, and concentration, what should we have? All the foods which are rich in protein, fish, poultry, meat, low-fat milk and milk products, pulses and eggs, they're all rich in protein. Fish, all the non-veg sources of protein are complete proteins. उसमें सब टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए. बट जो हमारी पल्सेस हैं, that is not a very good quality protein. जो भी vegetarian source of protein होता है वो इतना good quality नहीं होता. तो you should make sure that when you are eating a vegetarian source of protein like pulses, then you have to combine it with something else, maybe a nut, a seed, or a cereal, or any of the high protein foods from the animal source. Then nuts like almonds and walnuts and seeds like flax seeds, they also have omega-3 fatty acids, which are good for our brain. Broccoli, spinach, cauliflower, cabbage, these are the cruciferous vegetables, and they have unique in nutrients which promote healthy body and mind. The dark red and purple colored vegetables, like your blueberry, strawberry, black grapes, plums, beetroot, red cabbage, they have anthocyanins that promote and support your overall brain function. The next category of foods, mushroom, soybean, wheat germ, kidney beans is rajma, and paneer, they are all rich in choline, which makes the memory boosting brain chemical acetylcholine that we had discussed earlier. Again, dark chocolate with more than 70% cocoa is full of flavonoids, phenylethylamine, and caffeine, and it is very good for our memory, focus, and concentration, but you have to eat in limited quantities. Next, we come to caffeine. Can you tell me which all foods contain caffeine? Please write your answers in the chat box. Caffeine किन foods में पाया जाता है? The question is, caffeine किन तरह के foods में मिलता है?
So far, there are 3 answers saying coffee. Okay. Yes. Coffee has the maximum amount of caffeine, but it is also, Espresso. right. But it is also found in other foods. Acha. Energy drink. Yes, absolutely right. What else? Tea. Yes, tea also has low amounts of caffeine, but it is Fruit. there. Fruit. No, fruits don't have caffeine. Okay. Supplement like health drink. Crocin plus caffeine. Yeah, so if you have an energy drink, then they have this varied composition and it will have caffeine. So it is mainly found in coffee, tea, chocolates. Your cold drinks also have caffeine, and your energy drinks. For energy drinks, you can check on the label because it varies quite a lot. It can range from 40 to 250 mg per 250 ml. So there's a wide variation with respect to caffeine. Now, caffeine has both positive and negative effect on the body, depending on how much we are consuming and what is the frequency of intake. It energizes us, it enhances our attention, it causes alertness, facilitates thought formation, concentration, improved memory, decreased mental fatigue. ऑफिस में काम करते करते हमें लगता है ना मिड मॉर्निंग ब्रेक हो गई, लेट्स हैव कॉफी, आफ्टर लंच लेट्स हैव कॉफी, यू नो, दिमाग काम नहीं कर रहा, लेट्स हैव कॉफी. इट्स वेरी राइट, इट हैज ऑल दीज इफेक्ट्स ऑफ बूस्टिंग योर मेंटल हेल्थ, but there's a limit to which you should have. The safe limit is up to 200 milligrams per day. So 2 cups of coffee will roughly cover your 200 milligrams per day. And if you have more than 400 milligrams of day, if you're having cold drinks and energy drinks and coffee, or if you're having 4 cups of coffee, then it can cause anxiety, nervousness, palpitation, and insomnia. Insomnia means inability to sleep. So caffeine in low doses is good, but not in high doses because then it has a negative effect. Okay. May I ask if leaves have caffeine? There is an answer. Leaves. Tea leaves would have caffeine. Which leaves? Coffee are beans, tea is leaves. Not all leaves will have caffeine, but yes, tea leaves would have. Okay, thank you. Okay, healthy habits for sustained energy and alertness throughout the day. अगर हमें पूरा दिन energy चाहिए और है कि हम alert रहें, अपना काम अच्छे से कर पाएं, तो what we need to do is we should not skip meals, especially breakfast, and not also other meals. You should have small meals and snacks throughout the day. 5 to 6, early morning, breakfast, mid-morning, lunch, evening tea, dinner. So these should be your meals. So instead of 3 large meals, breakfast, lunch, dinner, split your meals into more number. So you'll eat on little bit and you'll have a sustained energy throughout the day. Eat more whole grains. We saw the complex carbohydrates, the whole grains with fiber. So they have a stabilized effect on the blood sugar levels. So go in for whole wheat flour, dalia, bajra, jawar, oats, and less of the refined foods which are made from maida or white rice or your maida stuffs and sugars and sweets. Eat fresh whole fruit instead of fruit juice and sweetened beverages. Fruit juice और fruit में क्या फर्क है? Whole fruit में fiber होता है और fruit juice में खाली जो उसका चीनी का पार्ट है, जो फ्रक्टोज होता है, वो होता है. So when you have a fruit juice, it is digested very quickly. But if you're having a whole fruit, it has fiber, so the blood sugar increase will be stabilized. कम बढ़ेगी, पर अगर आप फ्रूट जूस पी लेंगे immediately, तो immediately sugar आपकी बढ़ जाएगी और फिर कम हो जाएगी. So if you include protein and fat along with the carbohydrate, then also your blood sugars are stabilized. And you should keep hydrated. So your energy levels are sustained. You have a stable release of energy. थोड़ी energy body में आए, थोड़ा blood sugar आपका बढ़े और stable रहे. उससे आपका mood भी stable रहेगा, आप energetic भी रहेंगे, and you will also remain alert. So just a recap, what you should eat for mental and emotional health. So you should eat seasonal fruits and vegetables. कभी भी बाहर का कोई exotic fruit वो सब नहीं खाना है. Seasonal fruit जो आपका locally available है,
आपके घर के पास मिलता है, that is the best, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन भी सबसे ज्यादा होता है, सस्ता भी होगा। जैसे ही कोई फ्रूट हार्वेस्ट होता है और जब तक वो हमारे पास पहुंचता है तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी कम हो जाती है। सो ऑलवेज गो इन फॉर सीजनल, लोकली अवेलेबल, ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितना कलर मीन्स उतने ज्यादा उसमें हेल्दी कंपाउंड्स। देन फैटी फिश एंड एग, whole grains, pulses, chicken and lean meat, low-fat milk and milk products, nuts and seeds, fermented foods, green tea, and water. Now, these you have to eat in restricted amounts. Red meat, refined grains, dark chocolate, although it is good, but then if you have more, then it could be a problem because it will always have sugar and calories, and caffeinated drinks also in moderation. So 2 coffees, maximum 3, not more than that. And you have to eat less of processed foods, fried foods, sugars, sweetened beverages, and colas. Any questions up till now? We will go into the next topic, which is, till now we have seen how the food affects our mental health. Now we will be talking of how mood affects our food choices. So if you have any questions or any query up till now, please write in the chat box. I think we can proceed, Anita. Okay. We not only eat to satisfy our hunger, but we also eat sometimes to deal with our emotions. When we are in a bad mood, we feel depressed, anxious, or stressed, we tend to go in for foods which are high in calories, high in fat, high in sugar, low in protein. And these foods are called comfort foods. They're called comfort foods for a reason, because they give us comfort. How do they give us comfort? By releasing feel-good brain chemicals. So in order to deal with emotions, most of us, sometime or the other, go in for a comfort food. When we focus our mental energy on food, then it distracts us from the feeling that we are having, the sad or the depressed or the other feeling, the bad feeling that we are having. We are able to overcome that by getting pleasure from eating food. Once in a while, eating for feeding your feelings is fine. But if it happens very regularly, then it could be a problem. So you have to ask yourself, whenever you get the urge to eat, am I really hungry? What am I feeling? Am I really hungry, or am I feeling angry, bored, anxious, depressed, or nervous? And what do I need? Do I need food? Or if I share my feelings with someone, if I rest, will meditation make me calm? Or I need any other kind of comfort? So if you answer these questions, you will be able to see whether you're eating to feed your emotions or you're eating because of hunger. Now, this is an emotional eating cycle. People who constantly do emotional eating, what happens is that a stress comes, there's a trigger, you're in a bad mood, so you go in for a comfort food. You eat that comfort food, feel good hormones are released. You get a feeling of comfort, well-being. And then, because it is not just the type of food, the quantity is also more. And once you've eaten, because at that time you don't have control, and later on you realize, oh, what have I done? Why have I eaten so much? So there's a guilt and there's an anger. So again, it builds up the stress, and again, the cycle continues. Now, when this cycle becomes repetitive, then what will happen is, because your body does not need calories, your emotions are making you eat. So you will overeat, you will gain weight, and you will have related health issues like diabetes, hypertension, and ultimately it will lead to low self-esteem. Do you know that 75% of the overeating is caused by emotions? So it is very important to distinguish between emotional eating, the emotional hunger that you're feeling, or the physical hunger, if you have to break from this vicious cycle.
So physical, there's stark difference between the physical and the emotional hunger. Yeah, sorry. Sorry, can you just say in a few sentences in Hindi also what you were Yeah. talking about, emotional eating? Right. कभी कभी जब हम बोर्ड होते हैं एंड एंग्री हैं, स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स आती हैं जो हमें फूड को क्रेव करती हैं, और हमें फीलिंग होती है आज मुझे पिज्जा खाना है, मुझे चॉकलेट खाना है तो मुझे अच्छा लगेगा। उस टाइम हमें शारीरिक भूख नहीं होती है, पर हमें एक मानसिक भूख होती है, हमें अपनी भावनाओं को कर्ब करने के लिए भूख लगती है। और जब हम वो कंफर्ट फूड खाते हैं, कंफर्ट फूड क्या है, जो हमें रिलैक्स करता है। नॉर्मली ये क्या होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट होगा, हाई फैट होगा, पिज्जा, पेस्ट्री, चिप्स, और वो हमें बहुत अच्छा लगता है खा के, क्योंकि उससे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमें कंफर्ट मिल जाता है, और हम वो बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर ईटिंग का कंट्रोल नहीं है, हमारा मन भरता ही नहीं है उन चीजों को खा के। तो जब वो ज्यादा खा लेते हैं, हमारा मूड सेटल हो गया, और बाद में हम रियलाइज करते हैं अरे आई थिंक आई डिड रॉन्ग, ये मैंने क्या किया, ये तो मैं अपने ऊपर गुस्सा आता है, या अपने ऊपर एक गिल्ट आता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया या मैं कर पाई, और उससे फिर स्ट्रेस हो जाता है। अब फिर स्ट्रेस हुआ तो आप फिर कंफर्ट फूड के लिए चले गए। तो ये एक, अगर वंस इन अ वाइल है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ये रिपीट होती जा रही है, ये इमोशनल ईटिंग साइकिल, तो उससे फिर आपका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ेगा तो उसके साथ अलग जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, वो सब आ जाएंगी। वो आ जाएंगी तो आपकी लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी, लो सेल्फ एस्टीम हो गई, फिर स्ट्रेस हो गया, तो ये साइकिल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और कभी खत्म नहीं होता। तो इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पहचानना आना चाहिए कि फिजिकल हंगर और इमोशनल हंगर में क्या फर्क है। फिजिकल हंगर कम्स ऑन ग्रेजुअली, इट कैन बी पोस्टपोन्ड। टाइम हो गया खाने का, जब जैसे होता है कि हाँ 1 बज गया, खाने का टाइम है, अच्छा खाना नहीं बना, ओके आई हैव सम वर्क, ओके यू नो लेट मी टेक हाफ एन आवर, मैं उसके बाद खा लूंगा। इमोशनल हंगर कम्स ऑन सडनली एंड इट्स वेरी अर्जेंट, मुझे अभी पिज्जा चाहिए, मुझे अभी केक खाना है। फिजिकल हंगर कैन वेट, इमोशनल हंगर feels like it needs to be satisfied instantly. You don't want to wait. ये नहीं है तो आप कुछ और चीज उठा के खा लेंगे, मीठा केक खाने का मन कर रहा है, कुछ पेस्ट्री पड़ी है, कुछ मीठा पड़ा है, कोई चॉकलेट पड़ी है, कोई स्वीट्स, तो आप वो भी खा लेंगे। फिजिकल हंगर है तो कुछ भी अच्छा खाना आपके सामने आएगा तो यू विल बी सेटिस्फाइड। आपने दाल चावल खाए, जो भी सिंपल खाना भी बना है, तो यू विल फील सेटिस्फाइड, क्योंकि वो आपकी बॉडी की भूख थी जो खाने से पूरी हो गई। बट जब इमोशनल हंगर होती है तो यू क्रेव फॉर स्पेसिफिक फूड्स, pizza, ice cream, sweets, chocolates, pastries, and you will not want to eat a dal chawal for an emotional hunger. Physical hunger stops when you're full. जब आपका पेट भर जाता है तो आप रुक जाते हैं खाना, but emotional hunger goes on and on. पेट भरा होगा पर कहते हैं ना नियत नहीं भरती, तो emotional hunger is like that. You want to keep on eating, eating and eating. Physical hunger gives you satisfaction. मुझे भूख लगी थी, मैंने खाना खा लिया, I'm satisfied now. It will not give you a cause guilt or shame. On the other hand, emotional hunger triggers feeling of guilt, powerlessness, shame. Because when you eat more, later on you realize, oh, what have I done? Why have I eaten so much? And then there's a feeling of powerlessness, shame, and guilt. And that cycle keeps on repeating. So how to overcome emotional eating? First is you have to gain awareness. You have to make an intentional effort and think whether I'm emotionally hungry or I'm physically hungry. If you are emotionally hungry, then you have to find out what is the emotion that is triggering this behavior in you. अगर मेरा केक खाने का मन कर रहा है, मुझे भूख तो नहीं है, पर मेरे को ऐसा क्या फील हो रहा है, वो मुझे बहुत बुरा फील लग रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे अपना माइंड ईज करना है, इसलिए मैं केक खाना चाहता हूँ। सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई एंड डील विद द रूट कॉज ऑफ योर इमोशन, कि उस टाइम क्या इमोशन है जो आपको वो खाना खाने के लिए मजबूर कर रहा है, और आपको उस इमोशन को डील करना है। क्योंकि आप खाना तो खा लेंगे, जो आप क्रेव कर रहे हैं वो खा लेंगे, उससे आपकी इमोशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, इमोशन को आप डील नहीं कर पाते, वो इमोशन तो वहीं रहता है, वो तो एक टेम्पररी रिलीफ है जो आपको खाने से मिल रहा है। And then you have to develop alternative coping skills. Go for a walk, write down what you're feeling,
when you had eaten a particular food, what were you feeling at that time? So this will also help you to find out the emotional eating pattern or a trigger. Listen to music, talk to someone you trust, or do any productive work to take your mind off that craving. And make sure that you eat consistent balanced meals. If you're hungry, very hungry, then also you crave for food. Jo samne aaya, wo kha liya. So if you have your regular consistent meals, then it will also help you to avoid cravings and you will not have those hunger pangs. When you do get the urge to eat when you're not hungry, find a comfort food that's healthy instead of junk food. अगर आपका चिप्स खाने का मन कर रहा है, चिप्स मीन्स क्रंची, सॉल्टी, तो आप एक भेल पूरी बना लीजिए, चटपटी सी, मुरमुरा डालिए, उसमें थोड़े से नट्स डाल दीजिए, थोड़े सीड्स डाल दीजिए, चटनी डाल दीजिए, स्पाइसी बना लीजिए, तीखी मीठी मिक्स करके बना लीजिए. So to some extent it will help you. पेट भी भरेगा, कुछ न्यूट्रिशियस भी अंदर जाएगा, and you're not eating a junk food, and it's still a comfort food. And you, if nothing works, then you may seek the support from a professional. You all must have filled up this wellness quiz. Have you all seen your results of the wellness quiz? Geeta, have they all filled up this quiz? And do they have the answers with them? Most of them have filled up, but I'm not sure if they have the answer with them at the moment, Anita. At Healthy Mind Online, HMO, we make you fill this wellness quiz. And here, see, we are looking at you holistically. We are looking at your activity patterns. We are looking at your nutrition. We are looking at your resilience. So we are looking at you holistically because you are one person. Whatever you are eating or drinking, your mental health, your physical health, everything is correlated. We cannot look at it in isolation. Nothing can work in isolation. It has to be together. The choice of food and drinks you make, the quantity of food you have, your eating habits, they will affect your physical health and mental health. And your physical and mental health are also correlated. You may have good physical health, but not good mental health. So they affect each other. So you have to look at the entire program, at the wellness program. If you have to have a mental well-being, good mental well-being, then you have to be physically also healthy. You have to be active. You have to eat right. So everything together will make you a healthy and a happy person. So what we have learned today, we can use food to our advantage. We can have a positive influence on our brain chemistry, and we can have increased energy and a mental well-being. So use food to your advantage. When you see what can help and what cannot help, use food to your advantage. Create a positive brain chemistry and be physically as well as mentally well. Thank you. Thank you so much, Anita. That was a wonderful, wonderful presentation. I think बहुत सारी चीजें पता चली आज. मुझे नहीं मालूम था fermented foods में probiotics होते हैं. I didn't know idli dosa. मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, but I didn't know they were also good fermented foods. And there were a lot of things that I didn't know that I came to know today. And I think it is remarkable that we can actually change something in our everyday diet to change our sense and feeling of well-being. कितनी बार कितने ही foods के कमी की वजह से आपने बोला कि anxiety होती है, depression होती है, tiredness होती है, irritability होती है. कितना connection है, कितना deep connection है food and mental well-being का. Thank you so much for telling us about it. We are opening the floor for questions now. यदि आपके कोई सवाल है जो आप हमारे न्यूट्रिशनिस्ट से पूछना चाहते हैं, please feel free. आप chat box में लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपना raise hand कर सकते हैं and the admin will switch on your mic. So please go ahead. While everybody is thinking of questions, Anita, may I ask one question of my own?
ये जो आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया था, सेरोटोनिन, डोपामिन और एक बड़ा कठिन सा एसिटाइल नाम था, कोलाइन, हाँ। थैंक यू। वो उसका भी कोई सप्लीमेंट मिलता है या कोई नहीं, सप्लीमेंट नहीं मिलता है? वो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, अच्छा उसके लिए खाना खाना मेहनत पड़ेगा। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के सप्लीमेंट्स खाने का कोई मतलब नहीं है। वो तो बहुत बीमारी में जिसको बिल्कुल कुछ खाना खा ही नहीं सकते तो उस कंडीशन में देते हैं, एंड इट इज वेरी इजी। यू हाँ, जस्ट हैव टू ईट योर रूटीन फूड, यू डू नॉट नीड टू ऐड एनीथिंग टू इट। कोई हाँ, स्पेशल खाना नहीं खाना है, हाँ, बस आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, मेक श्योर सीजनल, लोकल, हेल्दी, बैलेंस्ड, फ्रेश। सिर्फ उतने में ही आपका ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी। देयर इज नथिंग स्पेशल दैट यू नीड टू ईट, नो सप्लीमेंट और एनीथिंग। किसी ने ओके। क्वेश्चन पोस्ट किया है, हाँ जी। क्या है? अर्चना, डिड यू रीड इट? या आई कुड रीड इट, या HMO एडमिन ने पोस्ट किया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू शेयर्ड, बट हाउ डू आई नो व्हाट इज गुड फॉर मी? मेरे लिए क्या अच्छा है? अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, सो यू कैन कंसल्ट ऑन 1-to-1 बेसिस, बिकॉज जब हम एक ग्रुप को एड्रेस करते हैं, जब इतने सारे लोग हैं, तो हम खाली एक जनरलाइज्ड प्लान ही बता सकते हैं। आई कैन नॉट टेल कि आपके लिए क्या अच्छा होगा। फॉर दैट यू विल हैव टू कम ऑन अ 1-to-1 कंसल्टेशन। Does anybody have any other questions? Please feel free to put in the chat box. We still have about 5-7 minutes. चलिए, एक चीज पूछी जा सकती है कि आई एम श्योर काफी लोग जो यहाँ पे हैं उनके बच्चे भी होंगे, एंड कई बार बच्चे बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं उनकी मदर्स कि हमने, जब पूछते क्या खाना बनाया है, बच्चे खाता नहीं खाते। या हम लोग भी हैं, कई बार आज मूड नहीं है ये खाने का, चलो कुछ और खाते हैं। तो हैप्पी ओकेजन्स में हम कुछ और खाते हैं, दैट सर्व्स द पर्पस। लेकिन वी बीइंग कॉन्शियस पर्सन कि फैटी नहीं खाना, ये नहीं खाना, पर लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं कि, जैसे कि अनीता भी बोल रही थी कि मूड एंड फूड ये इंटरकनेक्टेड है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर घर में, या जो लोग यहाँ पे हैं, वो अपनी, इट्स अ फ्री ओपन डिस्कशन कि जब हम मूड बनाते हैं कुछ खाने का, तो हमारा खाना किस तरीके का होता है। इट इज लाइक हैप्पी फूड, और इज इट लाइक हेल्दी फूड, और इज इट लाइक अकॉर्डिंग टू मूड। Archana, I couldn't get your query. Archana, can you repeat the question? Sorry. I think, Archana, can you hear us? Archana, can you hear? Yeah, hi. Can you repeat? You could put it in the chat box if you like. Can you hear me, Geeta? Yeah. Yes. Okay. So did you lose my voice in between? No, there was a request to ask you to repeat the question. What was the question actually? I cannot see actually. नहीं, वो अनीता ने कहा था। Okay, I'm asking is, in general हम लोग जैसे एक फैमिली की तरह भी डिस्कस कर रहे हैं कि कभी जब हम हैप्पी होते हैं या हम सैड होते हैं, या हम क्या खाने की ऑर्डर करते हैं। चलो, लेट्स टेक वन मूड, हैप्पी मूड। तो व्हाट डू वी थिंक? डू वी थिंक अबाउट हेल्दी फूड, और डू वी थिंक देखिए, अबाउट, कोई भी चीज रिस्ट्रिक्शन में तो कभी नहीं चलेगी। आप किसी भी चीज को, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे फैटी फूड कम करना है या स्वीट फूड भी कम करना है, ओकेजनल एवरीथिंग इज ओके, इन लिमिट्स एवरीथिंग इज ओके। सो एवरीथिंग इज ओके इन मॉडरेशन। आपको स्वीट्स खानी है, आप खाइए, बट इन लिमिटेड क्वांटिटीज। अगर आप वो पूरा मील ही स्वीट का खा लेंगे और खाना खाने की जगह खाएंगे तो इट इज रॉन्ग। बट आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, यू हैव योर फूड एंड यू हैव अ लिटिल स्वीट, so it will give you that sense of satisfaction also.
Nothing is good or bad in complete terms. In moderation, you can eat anything you want to have. Yeah, that's what I was asking. जो यहाँ पे हमारे सामने वेबिनार अटेंड कर रहे हैं कि आपका डिसीजन, जैसे अनीता ने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि मूड एंड फूड इंटरकनेक्टेड है, तो आज इतनी सारी चीजें हमें पता चली कि किस तरीके से हार्मोन्स, किस तरीके से हैप्पी हार्मोन्स आते हैं, किस तरीके से। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम डिसीजन लेते हैं घर में, ये मेरा क्वेश्चन उन लोगों के साथ है जो अटेंड कर रहे हैं वेबिनार, तो अच्छा, हम लोग सोचते हैं क्या कि हम कैसे ऑर्डर करें या बस विम्स एंड फैंसी में करते हैं? What has been our like decision making process for making food, cooking food, ordering food or party food? और आज के सेमिनार के बाद हमको क्या लगता है कि हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए? I mean, it's not, it's a general question. I just want to understand the feel of the people जो यहाँ पे हैं कि वो क्या सोचते हैं। सेमिनार से पहले वो कैसे सोचते थे फूड के बारे में, और सेमिनार के बाद जब अनीता ने इतनी बात बताई, आप कैसे सोचते हैं? Is there a difference? so When please write in the chat box if when we cook food or when we order food or when we make food, what are our parameters to have food? So ये जिस दिन हम जान लेंगे उस दिन I think हमारा बैलेंस निकल आएगा। Absolutely, Archana. so basically before this I think it was mostly kya, for me at least personally, tasty party food is all tasty food. Okay, party food is always tasty food. Party food is high fat food. It is tasty food. Occasional parties are not a problem. True. Everyone, see, हमारे तो कल्चर में फूड है ही है। खुशी है तो फूड है, गम है तो फूड है, कहीं जाना है तो फूड है, कोई आए तो फूड है, you know. सारा लाड दुलार भी फूड से ही आता है। Yes. So जितना लाड दुलार है, जितना प्यार है, वो भी फूड से ही निकलता है। Absolutely. So it is all around, but there are so many things. So you just have to think and then take a decision. That's all. And whenever you want to go in for any high calorie, high fat, high sweet foods, just do that in moderation. कुछ भी बंद नहीं करना है, बंद कुछ करके कुछ नहीं होता, उसकी इनफैक्ट अर्ज और बढ़ जाएगी, you know. मैं यही आपसे कहने वाली थी अनीता कि what are some broad tips that you can give us before we close, how to keep our physical weight in balance and how to keep our emotional eating in check. कोई broad tips दे के let's finish. Okay, I'll give you a general day's guideline. I mean, it does not specify quantities, but the kind of food. So I think that Sure. if everyone can. So this is a sample diet for your mental, emotional well-being, and it will also take care of your physical well-being. सुबह उठ के 1 glass lukewarm water. आप उसमें लेमन डालिए, नहीं डालना है मत डालिए, मेथी दाना डालिए अगर आप डायबिटिक हैं या आपको पीसीओडी है, सौंफ डालिए अगर आपकी डाइजेशन पुअर है, सिनेमन डालिए अगर आप डाइजेस्टिव हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम है, तो हैव अ ल्यूकवार्म ग्लास ऑफ वाटर अर्ली मॉर्निंग। उसके साथ 8 या 10 बादाम खा लीजिए, 2 वॉलनट्स खा लीजिए, और आपका काफी कोटा ऑफ ओमेगा 3 और गुड फैट्स यहाँ कवर हो गया। अब उसके बाद हम ब्रेकफास्ट में चलते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रात को आप ओट्स को दूध में भिगो के रख दीजिए फ्रिज में, सुबह उठिए उस, और साथ में चिया सीड्स भी आप ऐड कर सकते हैं, और सुबह उसमें थोड़ा सा हनी डाल लीजिए, शुगर डाल लीजिए, कोई भी फ्रूट डाल लीजिए आपकी चॉइस का, थोड़ा उसमें दूध एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपने उसमें आमंड्स सुबह नहीं खाए हैं तो आप उसमें नट्स, ड्राइड फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं। 2 मिनट हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी। और एक और जिनके पास टाइम कम है, इट्स अ फ्रूट स्मूदी, द लास्ट ऑप्शन इफ यू सी। दूध या दही में थोड़े से ओट्स डाले, थोड़ी चिया सीड्स डाले, फ्रूट्स ऑफ योर चॉइस मिक्सी में घुमा दिया, एंड यू हैव अ कंप्लीट नरिशिंग ग्लास फुल ऑफ मील, जिसमें आपको 2 मिनट ही लगेंगे पीने के लिए। और अगर आपके पास टाइम है खाना खाने के लिए तो हैव योर स्टफ्ड रोटी, कोई भी दाल, पनीर, कोई भी सब्जी जो सीजनल सब्जी है वो ऐड कर लीजिए। मिस्सी रोटी बना लीजिए, मल्टीग्रेन आटा विद पालक मेथी, हैव इट विद कर्ड। इफ यू फॉन्ड ऑफ एग यू कैन हैव अ बॉइल्ड एग और एन ऑमलेट। उसमें कोई सब्जी अपनी पसंद की डाल लीजिए, लाल शिमला मिर्च, मशरूम्स, ग्रीन कैप्सिकम, या फिर होल व्हीट टोस्ट या मल्टीग्रेन टोस्ट ले लीजिए पनीर के साथ। यू कैन हैव
मिक्स वेज बेसन चीला, दाल चीला विद ग्रीन चटनी, अपना नॉर्मल इडली पोहा, पोहा दलिया उपमा, इडली डोसा उत्तपम विद चटनी एंड सांभर. मेक श्योर कि जो आप सांभर बना रहे हैं उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स हों. देन यू कैन हैव योर टी, मिल्क, कॉफी और बटर मिल्क. सो ये नॉर्मल ही ब्रेकफास्ट, आई थिंक इन्हीं में से कुछ ना कुछ होता है एंड एवरीथिंग इज फाइन. अगर आप दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल रहे हैं तो उसका एक बेटर ऑप्शन होगा ओट्स. उस ओट्स के साथ थोड़े से आमंड्स डाल दीजिए, थोड़ी सी चिया सीड्स डाल दीजिए और ये आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट हो गया. आप रोटी खा ही रहे हैं, आलू का पराठा खा रहे हैं, उसमें वेजिटेबल डाल दीजिए. और आटे में आप मल्टीग्रेन आटा यूज कर लीजिए या आप चने का आटा मिक्स कर लीजिए, तो वो आपकी रोटी और न्यूट्रिशियस हो गई. सो ये छोटे छोटे चेंजेस से ही यू कैन हैव अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट. मिड मॉर्निंग में हैव समथिंग टू ड्रिंक, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, बटर मिल्क या छाछ, सत्तू, एंड यू कैन हैव अ सीजनल फ्रूट विद इट. लंच और डिनर इज नॉर्मल स्टैंडर्ड. आपने सूप ले लिया या सैलेड ले लिया, वेजिटेबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चपाती में आप जैसे दिल्ली में तो ठंड होती है तो यू कैन इवन ऐड योर बाजरा फ्लावर, नहीं तो आपका रागी का आटा, कुछ भी मिक्स फ्लावर्स की आप अगर चपाती खाएं तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. उससे फाइबर भी बढ़ता है और न्यूट्रिशियस भी ज्यादा होती है. हैव ब्राउन राइस, सीजनल वेजिटेबल्स, दाल, फिश, चिकन, सोया नगेट्स, टोफू और साथ में कर्ड और रायता. शाम का टाइम है जब हमें बहुत भूख लगती है एंड वी वांट टू हैव समथिंग सैटिस्फैक्टरी, तो अगर आपने सुबह फ्रूट स्मूदी नहीं भी आप शाम को बना सकते हैं. ग्रीन टी, कॉफी, लेमन वाटर, बटर मिल्क. Then you can have your sprouts chaat with vegetables. You can have bhel puri with roasted black chana. You can have roasted makhanas or a homemade dhokla. अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिला है अपने सीड्स और नट्स खाने का तो आप इस टाइम खा लीजिए. बादाम को भून के रख लीजिए, सीड्स को रोस्ट करके रख लीजिए, पम्पकिन, सनफ्लावर, फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, तिल सीड्स, तो आप इनका मिक्सचर नट्स और सीड्स का खा सकते हैं. आप फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं या आप एयर पॉप्ड कॉर्न खा सकते हैं. और अगर आपको रात को नींद अच्छी चाहिए तो कैमोमाइल टी या गर्म दूध, उसमें आप चाहें तो आप टर्मरिक भी ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज अ नॉर्मल डेज डाइट व्हिच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट वी हैव टॉक्ड ऑफ. And if you make these little changes to whatever you are eating, you can have a good physical as well as mental health. Thank you so much, Anita. This was a very good, a very good feel of what everyday good healthy food can look like, and it's all looking very tasty also. मतलब सिर्फ पार्टी फूड ही नहीं, रोज का खाना बहुत टेस्टी हो सकता है, provided we choose the right kind of foods and have them in moderation. Great talk from you, Anita. Thank you so much. So let me talk a little about how Healthy Mind Online is engaging with you with different talks every month, and how, if you want further assistance, further help from us, you can get in touch with our specialists, whether it is for physical health or mental health, because as we found out from a very well established research, as well as from our own experience, physical health और mental health बिल्कुल साथ साथ चलते हैं. दोनों में से एक भी अगर ऊपर नीचे है तो बात परेशानी की है, and दोनों ही impact होते हैं. एक ठीक नहीं चल रहा है फिजिकल हेल्थ तो फिजिकल हेल्थ ही नहीं, मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है. द अदर वे अराउंड, मेंटल हेल्थ आपकी अगर ठीक नहीं है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी, which is why it is very important to take care. ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिंदगी हमारी जिम्मेदारी. So this is as you can see on the screen, this is our landing page. Responsive site है, कंप्यूटर पे भी ऐसी दिखती है और फोन पे जाए तो it's equally responsive. Admin, can you go to the next slide? Yeah. So every month we send an EDM to engage you, and in the EDM we have resources which have where there is something you can listen to, or something you can watch, or something you can read with an estimated amount of time that it will take you to read. तो आप हर महीने आपको resources में कुछ पढ़ने को, कुछ देखने को, कुछ सुनने को हम भेजते हैं. Slide गायब हो गया. Can you show us the slide again? So just as I was saying, every month we send you an EDM letting you know what the topic is of the webinar,
and we send you resources connected to that topic. And every month we have a webinar where we have a specialist give you a talk on some topic related to health and wellness, chahe wo physical health ho ya mental health. Our focus is on mental well-being. And we also have links to the resilience quiz and the, okay, so those are the resources. Then we talk about the webinar. Then that's the link to the resilience quiz and our wellness program, which is our 4-week program, wherein आप किसी specialist के साथ 4 हफ्ते तक text करके बात कर सकते हैं और अपनी सेहत को सुधार सकते हैं. The specialist 4 हफ्ते तक आपको टिप्स देगा, गाइडेंस देगा टू एंड हैंड होल्ड करेगा, आपके साथ साथ चलेगा या चलेंगी, ताकि आप आपकी जर्नी में आप अकेले नहीं. और आप डेफिनेटली आवर एक्सपीरियंस हैज बीन देयर इज इनॉर्मस सक्सेस इन 4 वीक्स. तो ये एक तो 4-week प्रोग्राम होता है और एक ऑनलाइन वीडियो सेशन भी होता है जो कि आप स्पेशलिस्ट के साथ ले सकते हैं. You can have a 1-hour session with the specialist, and because your companies have partnered with Healthy Mind Online, these sessions, whether they are for 1-hour video session or 4-week program, they are free for you. You don't have to pay for them. Can we go to the next slide, please? So, जैसे अनीता बता रही थी, रेजिलियंस क्विज करके आप रेजिलियंस क्विज का लिंक आपको हर महीने भेजा जाता है. You can gauge and assess what your health is like, and resilience quiz has questions for both your physical health and your mental well-being. And there are many areas which are the questions are about many areas of your life and your well-being. So इससे आपको बहुत अच्छा अंदाजा मिलता है कि आपकी हेल्थ इस वक्त कैसी है. Can we go to the next slide? So और जो 4-week प्रोग्राम है उसके लिए हमारे पास ऐप है. उस ऐप का लिंक हम हर EDM के साथ भेजते हैं. एंड्रॉइड के लिए भी है या एप्पल के लिए भी है. और आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद ये आपका होम पेज होगा. और जैसा आप देख रहे हैं ऊपर जो नीचे जो लिखा है अब स्पेशलिस्ट्स, अगर आप स्पेशलिस्ट्स वाले बटन को दबाएंगे तो यू विल गो टू द पेज वेयर द स्पेशलिस्ट्स आर एंड यू कैन रीड अबाउट देम. उनका प्रोफाइल है, सो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं एंड यू कैन डिसाइड हु फिट्स बेस्ट विथ यू. मैसेजिंग के लिए आप जैसे ये रजिस्टर किया, सेकंड पिक्चर में आप देखिए ऊपर टॉप राइट में मैसेज है, उसको आपने दबाया तो यू कम टू अ पेज which is very secure, very confidential. It is anonymous. Nobody comes to know about it. And this is it's as easy as WhatsApp. आप मैसेज करें, आपको जैसे जब स्पेशलिस्ट देखेंगे वो आपको जवाब देंगे. और ये मैसेजिंग पेज काफी पावरफुल है. स्पेशलिस्ट आपको लिंक्स भेज सकता है, अगर वो कुछ वीडियोस दिखाने चाहते हैं आपको इसी पे भेज सकते हैं. कुछ पढ़ने का मटेरियल भेजना चाहते हैं वो भी इसी पे भेज सकते हैं. आप स्पेशलिस्ट को अगर वो आप चाहते हैं कि आप कोई क्वेश्चनर करें या कोई असेसमेंट करें वो भी इसी पे होता है. एंड ऑल दोज असेसमेंट्स आर आल्सो स्टोर्ड इन अ डिफरेंट प्लेस व्हिच आर विजिबल टू यू एंड योर स्पेशलिस्ट ओनली. सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड ऑल द सर्विसेज दैट वी ऑफर आर अनोनिमस. आपको अपना मतलब nobody will come to know. जब हमें नहीं पता चले तो there's no way anybody will come to know that you're taking these services. So can we go to the next? So जो अगर आपने स्क्रीनर लिया है तो उसका रिजल्ट आपके लिए और आपके स्पेशलिस्ट के लिए स्टोर्ड रहता है for easy reference. So this is the offering that Healthy Mind Online has for you. Please do make use of it. आप one-on-one सपोर्ट ले सकते हैं अनीता के साथ या 4-week प्रोग्राम ले सकते हैं अनीता के साथ if you want. So one-on-one वीडियो प्रोग्राम ले सकते हैं, 4-week प्रोग्राम ले सकते हैं. It is up to you. We encourage you to be mindful about your health, physical and mental. We encourage you to take care of yourselves. Wishing everyone excellent health. I think we are just in time and exactly on time. I would like to close the webinar. Huge thanks to our panelists. Anita, thank you so much for giving us such wonderful information. Very valuable, very helpful.
Archana, thank you for being here. Thank you for supporting us as always. Hope everyone has got something new to learn from this webinar. Hope everyone has found some value in it. Thank you so much. And thank you so much to all the participants who have given us your valuable time. Many thanks. Bye-bye. Thank you. Thank you. Appreciate it, Archana. Thank you.